Jai Sri Jagannath. Good morning, my dear students. So I hope everything fine at your end. Today in this class, we are supposed to have a discussion on what is grammar, that is the concept of grammar, multiplicity of meaning, and grammar as a tool in communication. ये तीनोटी प्रमुख जिनिस आज क्लास रे डिस्कशन करिबा. प्रथम होचे concept of grammar, व्याकरण रो अपधारणा परिभाषा. Then second one is that is multiplicity of meaning. तो ग्रामर विभिन्न सेंस रे हमें यूज करछे. मीनिंग वैरायटी सेंस रे वैरायटी कॉन्टेक्स्ट रे मीनिंग वेरी करछे by using grammar. That also we'll discuss. And finally, the most important part that is supposed to be discussed in this class, that grammar as a basic tool in communication. व्याकरण भावर आदान प्रदान रे व्याकरण प्रमुख भूमिका रही. एक कथा को हम जानिबा को पड़िबो. एमती सेमती कम्युनिकेशन कले हम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हेई परिबो नाही. तो ए सब जिनस हम डिस्कशन करिबा. सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, लेट मी conceptualize first what is grammar. Okay, so as we know, grammar is a group of rules and structures. That is the idea we are having in our mind. समस्त मन रे गुटे धारणा अछि केते गुडिए rules और structures को नै grammar हेछि. But before discussing that what is grammar, I will ask you some questions. So let me ask questions. प्रथम question होछि, whenever you would like to express yourself, do you want clarity in your expression? तुम्हें जतबे निजो को एक्सप्रेस करूछ, तुमरो अभिव्यक्ति रे तुमे स्पष्टता चाहुछ कि? आंसर विल बी ऑब्वियसली यस. तुमे निश्चय आंसर दबो हां मो अभिव्यक्ति रे स्पष्टता चाहुछि. यस, आई नीड क्लैरिटी इन माय एक्सप्रेशन. Then the second question, do you need systematization in your expression? तुम्हें तुम अभिव्यक्ति रे गोटे प्रॉपर अरेंजमेंट प्रॉपर सीक्वेंस चाहुछ कि शब्द विन्यास गुडी को ठीक से हेतिबो, वाक्य विन्यास केते सुंदर लागुथिबो चाहुछ कि? ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी यस. यस, आई नीड प्रॉपर अरेंजमेंट, सिस्टमैटाइजेशन एंड सीक्वेंस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, do you need linguistic etiquettes in your expression? तुमे चाहुछ कि तुम भावधारा रे भावर अभिव्यक्ति रे भाषागत शिष्टाचार थिबो, भाषार सावलीलता थिबो? आंसर विल बी ऑब्वियसली यस. यस, आई नीड प्रॉपर लिंग्विस्टिक एटिक्वेट्स. डू यू नीड कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन योर एक्सप्रेशन? तुमरो अभिव्यक्ति रे भावर विकेंद्रीकरण एवं भावर केंद्रीकरण थिबो कि? यस, आई नीड कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस इन माय एक्सप्रेशंस. And the final question, do you need deductive reasoning in your expression? तुमे जो कथाटी परिप्रकाश करूछ ताहा एक तार्किक हेबा दरकार, ताहा एक युक्ति संगत हेबा दरकार. Yes, answer will be obviously yes. So depending upon the answers, I will arrive at a conclusion of what is grammar. एही उत्तर बेसिस रे मु ग्रामर गोटे कंक्लूजन गोटे डेफिनेशन रे अराइव करूची. So what is the definition? Grammar is about clarity, systematization, proper arrangement, proper sequencing, proper convergence, divergence, deductive reasoning, and the most important word is grammar is all about linguistic etiquettes. व्याकरण कहिले भाषागत शिष्टाचार, भाषा को एक सुललित संगठित सावलील भाव में उपस्थापन करिबा हेउची व्याकरण प्रमुख कार्य. So finally another definition I would like to say, ए संदर्भ रे आउ गोटे परिभाषा हम कहूची, grammar is not only a set of rules and structures but also it is a system which enables us to create meaning and to give the meaning and to construct the meaning. यह केवल केते गुडी नियम और स्ट्रक्चर समाहार नुहे, यह एक सिस्टम जहा हमको समर्थ कराउची टू क्रिएट द मीनिंग इन ए प्रॉपरफुल मीनिंगफुल मैनर. हमर भाषाटा को एक सुंदर अर्थ रे परिप्रकाश करिबाकू. So this is all about grammar. So I think you must be clear about what is the concept of grammar. Again I am repeating the concept. Grammar is not only a set of rules but also a system that enables us to
organize and create the meaning in a meaningful manner. So that is about grammar. Let's come to the second step. I have told that we'll discuss about the multiplicity of meaning. That artha hoji a single word or structure is used differently, and that creates different meanings depending upon three things. So what are the three things? One is context, another is intonation, another is interpretation. That means the single word is giving different meanings. We can produce different meanings of a single word depending upon the context, intonation and interpretation. गोटे सिंगल शब्दर विभिन्न अर्थ परिप्रकाश करिवो कॉन्टेक्स्ट रे व्यवहार हेले अलग अलग अर्थ हि जिवो एवं इंटोनेशन आधार रे मते चेंज होबो एवं इंटरप्रिटेशन आधार रे चेंज होबो कॉन्टेक्स्ट रे गोटे एग्जांपल दोछि लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट काउस ईट ग्रास गाय घास खाए काउस ईट स्ट्रॉ गाय कुट्टा खाए काउस ईट्स फॉडर A child doesn't understand what is fodder. पिला जानिनी फॉडर रो अर्थ कोन किंतु ए कॉन्टेक्स्ट को देखले से जानि परिबो गाय घास खाए गाय कुट्टा खाए एवं से फॉडर टा गोटे खाद्य ही हेइथिबो तो ऑटोमेटिक से कंक्लूजन रे पहुंची जिवो ना नहीं तो एमती हमें जेतबे न्यूज़पेपर रीडिंग करू हमें कोन सब शब्द गुडी को अर्थ जानि थाउ की whenever we are reading a newspaper in English is it necessarily to know about all the words and structures? No, in the context we can guess the meaning. The second word is intonation. Then depending upon the intonation, also the meaning producing differently. The single word is producing different meanings. Intonation. Let me give some examples. कारण उदाहरण माध्यमରେ ଆମେ ଜିନିଷଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବା. Suppose I am giving an example. Are you a liar? ଆପଣ ଜଣେ ମିଛୁଆ କି? You are a liar. What a liar you are. Denoting sentence guide. You are a liar. This is an affirmative sentence. Intonation is changing. Are you a liar? Apan jane michua ki. What a liar you are. Suppose another example I am giving. Commanding sentence. Stand straight. This is commanding. Please sit down. This is request. That means the tone is changing and the meaning is changing. The meaning is also producing differently. Am I right? So depending upon the intonation, mostly the intonation word is used in poetry, but also in prose. Depending upon the intonation of the teacher, the variety context is used in the class. So we have a false notion that amar one bhrama dharana achi ki kebole intonation is necessary in the poetry class. No, that's not so. Intonation, that is rising tone, falling tone, rising, falling, rising. Also in prose we are doing that. Rising tone, falling, rising. So these words, these tones are simultaneously used in prose teaching also. Okay. Then the last one is interpretation. Interpretation. गोटे सेंटेंस दिया जाइछि आमे किपरि भाबरे ताकु तर्जुमा करिबा जदि से सेम सेंटेंस मु एग्जांपल देबी ताकु इंटरप्रिटेशन डिफरेंट मीनिंग आसी जिवो गोटे एग्जांपल दउछि फॉर एग्जांपल ए वुमन without her man is meaningless. तो ये सेंटेंस रो अर्थ कोन आछले ए वुमन without her man is meaningless. गोटे स्त्री तार स्वामी बिना अर्थहीन. Just I am changing the comma. A woman without her man is meaningless. That means here the comma is after her. With a woman without her man is meaningless. The first one is a woman without her man. After that man pore comma rahila is meaningless. The prathama sentence interpretation kon hobo a woman without her man is meaningless. Jane stree tar swami bina arthahina. Second sentence, woman without her man is meaningless. Ta mane gote stree bina purusota arthahina hoigala eti. So only there is a change in the comma. The words are same, the structures are same, but the meaning is interpreted differently. That means
the use of punctuations, the use of विराम चिन्ह बदल बदल हो गला, अर्थ बदल बदल हो गला. एमती अनेक उदाहरण अच्छी. तो जब आउट एग्जांपल हम दोची, let's eat grandma, let's eat grandma, grandma चलो आमी खाइबा, let's eat grandma. लेट्स इट ग्रांडमा माने आम कोन ग्रांडमा को खाइबा की ना. तो लेट्स इट परे गोटे आमे पॉज नबा, गोटे कमा नबा, गोटे पॉज कमा नहीं गोटे फुल स्टॉप दबा. तो गोटे पॉज नबा, पॉज नेला परे ग्रांडमा कहिबा लेट्स ईट ग्रांडमा. तो चलो खाइबा जेजेमा चलो खाइबा. जेते को हमें एट लीस्ट स्ट्रेट विदाउट एनी पॉज वी आर expressing the sentence completely, let's eat grandma. So that means grandma को हमें खाइबा. तो एमती भावरे इंटरप्रिटेशन चेंज हो. इंटरप्रिटेशन इज बीइंग चेंज्ड regarding the use of punctuation marks, also depending upon the tones, differently it is ascribed. So this is about multiplicity of meaning, and there are some sources of multiplicity of meaning. The first source is polysemy. Polysemy means a single word have different meanings. गोटे एग्जांपल दोची तो क्लियर हो जिवो. गोटे शब्द दीटा अर्थ. गोटे फ्रेज कहूची रिवर बैंक, इंडियन बैंक. ओके, रिवर बैंक, इंडियन बैंक. तो प्रथमटा होची नदी कूल बैंक अर्थ, किंतु इंडियन बैंक एटी बैंक अर्थ होची कमर्शियल ट्रांजैक्शन जोटी होची. इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. तो शब्द सेम किंतु अर्थ अलग हो. जहाँ को हमें होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोलिंगुआ हमर सब अच्छी इंग्रजी साहित्य रे. तो तको हमें परवर्ती के क्लास रे डिस्कशन करिबा. तो ये होची गोटे सोर्स पॉलिसेमी. आ गोटे सोर्स होची सिंटैक्स. सिंटैक्स अर्थ होची स्ट्रक्चर, जार ओडिया अर्थ होची शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास. एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट. कहीं कि ना हमें जो सेंटेंस टी करिबा, शब्द को हमें सुंदर भाव सजेइबा, कर्ता रखिबा, क्रिया रखिबा, कर्ता पर क्रिया, क्रिया पर क्रिया विशेषण, विशेष्य, ये सब शब्द गुडी को गोटे ढंगर रखिबा. हम एमती मैनिपुलेशन करि परिबा नाही. मैनिपुलेशन कले द सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. तो हमको शुद्ध भाव में सावलील भाव में प्रॉपर अरेंजमेंट करिया पड़िबो. जेमति कि हमरो एसबी पैटर्न हमर सिंटैक्स स्ट्रक्चर कोन सब होची सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब डबल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट एडजंक्ट. इन द विभिन्न पैटर्न में हम सेंटेंस को रखिबा. वी कैन नॉट यूज इट इन आवर मैनिपुलेटिव मैनर. It has a definite pattern. We have to follow a particular pattern in order to make the sentence grammatically right. Am I right? So syntax को example दोची. केमती the boy chased the dog. The dog chased the boy. Words are same, structures are same, but meaning is different. The boy chased the dog. The dog chased the boy. प्रथम सेंटेंस से पिलाटी बालक को चेज कला, सॉरी पिलाटी कुकुर को चेज कला. सेकंड सेंटेंस रे कुकुरटी बालक को चेज कला. तो माने खाली नाउन टा रिप्लेसमेंट हे गला एपट सपोर्ट, किंतु सेंटेंस अर्थ चेंज हे गला और सब स्ट्रक्चर समान अछि. तो सिंपली सिंटैक्स होची प्रॉपर अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, शब्द विन्यास और ज्ञान के निहाती रहिबा आवश्यक. तो दिस इज अबाउट सिंटैक्स. एंड अनदर इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स of multiplicity of meaning is tense, that is mood of the speaker. So mood of the speaker is indicated by tense, but speaker mood ta kemte depend korchi is tense. So we must have the knowledge of tense patterns. It is quite indispensable, it is quite important, it is an inseparable part of grammar. Grammar it is an inseparable part. याको में separable करि परिबा नाही. Suppose an example दोची, I teach now, I am teaching now. I teach now, I am teaching now. In which sentence the type perspective is clear? Can you say? Yes, you can obviously say the second sentence is, in the second sentence type perspective is completely clear. I am teaching now. Vartaman mu podhuchi. I teach now means it is indicating all the times. No, the present, at the present moment I am teaching, isn't it? You are all listening to me. Not you listen to me, you are all listening to me. Another example I am giving. In this house I have seated, my father has built this house. But suppose I will say, my father will build this house. So that means
The communication, that means you have no idea of tense patterns. Mo bappa e ghar tiyari karibe, mo bappa ghar tiyari karishanti. In which sentence type perspective is clear? The first one, my father has built this house. So tense pattern is obviously required. We must know, particularly basically we must have the ideas of simple present, simple past and simple future. In order to express our expressions in a systematized manner, we must have the conceptual clarity and the basic knowledge patterns about the tense patterns. So this is all about multiplicity of sources. Just in a nutshell I am speaking, multiplicity of meaning means a single word can produce different meanings. A single structure can produce different meanings depending upon the context, depending upon the intonation, depending upon the interpretation. And the sources, regarding the sources I have told about the polysemy and the syntax and the tense pattern. The last one, I have told you that in this class we are supposed to discuss grammar is a basic tool of effective communication. जदि आमको सुंदर भाव प्रभावशाली भाव आदान प्रदान करिवार अछि तो व्याकरण को ही आमे गोटे इंपोर्टेंट माध्यम ग्रहण करिबा. विदाउट ग्रामर कम्युनिकेशन इज इनइफेक्टिव. That is broken communication. That is the communication of the uneducated fools, dull people, monotonous people. बिना व्याकरण सहायता रे आमे जो भावर आदान प्रदान करिबा से भावर आदान प्रदान संदेहीन होई जिवो, जहा कि अशिक्षित लोक मानकर भावर आदान प्रदान भली. तो ग्रामर, the basically nowadays syllabus makers, curriculum planners are emphasizing grammar as a tool of communication, not memorizing the rules and structures. So grammar is a basic tool of communication. So just in a nutshell I am speaking what is communication. Communication has been derived from the Latin word share, communis, which means share. गोटे लाटिन शब्द रा व्युत्पत्ति होईची, एटिमोलॉजिकल मीनिंग व्युत्पत्ति अर्थ जार अर्थ शेयर. आमे गोटे जिंस को शेयर करूचे, and that sharing will be acknowledged properly if the concerned respondent is responding you. तुम्हें जो जिनसटा शेयर कल, जदि तुम सामना वाला जे तुमको शुणुची लिसनर से जदि प्रॉपर्ली रेस्पोंड कला, तुम्हें जानिबो जे तुमरा शेयरिंग टा इफेक्टिव अछि. तो हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करिबार अछि. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करिबा को हेले हमको ग्रामर रो सहायता निश्चित भाव रे नबा को पड़िबो. बिकॉज़ वी हैव टू ट्रैवल, द स्पीकर हैज टू ट्रैवल स्मूथली. The words of the speaker must travel smoothly to the listener. Speaker शब्द गुड़िक smoothly listener पाके पहुंचिया दरकार, so that listeners will respond also smoothly, isn't it? That means to make a standardization in your expression. तुम expression को standardized way रे गोटे framework, you have to give a proper framework regarding the use of structures and ideas that will give a clear cut meaning. So communication must have clarity, must have conciseness, must have grammatical linguistic etiquettes. I hope I must have given some clear idea in this class. If any ambiguity, any conceptual ambiguity within you, I can make it clear in our next class. Fine, thanks you for your sincere cooperation. Thank you. Jai Sri Jagannath.